Hello everyone, welcome back to our channel. This is Navni Gulati from Team Lexus & Company and we are back with another video. In today's video, I will be talking about the topic legal notice. I will cover all the related topics regarding legal notice. Legal notice क्या होता है? What are the essentials of a legal notice? When to file a legal notice? How to file a legal notice? आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी. यस, जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है ही और शी हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड by his legal rights, his rights are infringed, he needs a legal remedy, then he needs to file a legal complaint, he needs a legal solution to his or her problem, then a legal notice is sent. क्या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम लोगों को लीगल नोटिस भेजना पड़ता है? क्या जब कोई कंज्यूमर कंप्लेंट होती है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, या फिर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, या कोई चेक बाउंस का इशू है. ऐसे बहुत इश्यूज होते हैं व्हेन वी हैव टू इनिशिएट अ लीगल एक्शन. So for initiating that legal action, sending a legal notice is an essential part. It is important to inform the other person or the entity that you are taking a legal action and your right, and you are not satisfied with certain action of the other person. So legal notice is a formal written document which tells about a grievance of one person with another person or an entity. It's like a warning, it's a final warning, or you can say ये एक alert होता है दूसरे person के लिए that we are not happy, we are not dissatisfied, we are dissatisfied, and we want to institute a legal action against you. So yes, legal notice क्या बिना lawyer के frame हो सकता है? Can a notice be sent without a consultation of a lawyer? So yes, my answer to this would be yes. आप एक नोटिस भेज सकते हैं बिना किसी लॉयर के हेल्प के to another person when your right is infringed, but that notice is not a legal notice. It is a notice on which behalf a suit can be instituted, बट वो लीगल नोटिस नहीं कहलाया जाएगा. जब एक लॉयर नोटिस ड्राफ्ट करता है तो ही इंस्टीट्यूट्स अ लीगल थिंग इनटू इट. The legal sections, the law related sections, what right can you avail, what is the remedy, and that a legal language is there. But normal notice doesn't have this, and a legal notice is always beneficial. जब आपको आगे सूट इंस्टीट्यूट करना होता है, then legal notice comes to a benefit to that person. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है लीगल नोटिस तो है, पर क्या लीगल नोटिस सर्व करना मैंडेटरी है सूट से पहले? तो टू दैट माय आंसर वुड बी नो. हर सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले लीगल नोटिस सर्व करना मैंडेटरी नहीं होता, बट देयर आर एक्सेप्शंस. One of which is section 80 of CPC. Yes, section 80 of CPC states that जब किसी पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो इट इज मैंडेटरी टू सेंड हिम और हर द लीगल नोटिस. यस, जब भी आपको इन दोनों व्यक्तियों के अगेंस्ट कोई मुकदमा दर्ज करना है तो आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट इज इट नेसेसरी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जब कोई चेक बाउंस का केस होता है तो इज इट नेसेसरी कि आपको लीगल नोटिस भेजना है? यस, दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शन. हम लोगों को चेक बाउंस के केस में एक लीगल नोटिस भेजना है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 30 days. यू हैव टू सेंड अ लीगल नोटिस. तो लीगल नोटिस ड्राफ्ट कैसे करवाया जाए? इफ यू आर ड्राफ्टिंग अ लीगल नोटिस, यू मस्ट गो टू योर एडवोकेट. Your advocate will write your complaint, write your problem in a legal writing on his letterhead.
उसके लेटर हेड पर वो आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो जिस भी चीज़ के लिए आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, जिसके अगेंस्ट करना चाहते हैं, you will tell your lawyer the whole story and your lawyer will draft a notice on his letterhead which will start as under the instructions. वो ऐसे स्टार्ट होएगा, the instructions of my client dash resident of dash. तो इस तरीके से वो नोटिस स्टार्ट होएगा and then it will come to I have to address you as under. Second line आएगी I have to address you as under, and under that the lawyer will state my client states that. Always the language in a legal notice would be my client states that, because the problem, the complaint is behalf of the client, is on the behalf of the client, and वो client की story है. It should not give an assumption that lawyer has fabricated the case or has instituted something into the complaint by his own choice or own will. जो भी story उसको उसके client ने narrate करी है, he has to state it that ways, and he has to write my client states that, and he has to complain according to that. And lastly, after stating your complaint, you have to state your action, what remedy you want, what action you are taking. Basically आप क्या चाहते हो दूसरी पार्टी से, what you want from the other party, वो आप उस चीज़ को conclude करेंगे. And lastly, आप एक टाइम लिमिट दे देते हैं दूसरे इंसान को कि within this time limit आपको ये to seek my advice or seek the remedy I want, or to come up with the solution, otherwise I will institute a notice against you. So lastly, you give a time limit to the other party against whom you are sending a legal notice. And at last, it is signed by both the advocate and the client, and then it is sent to the receiver to whom against you are instituting that legal notice. So that is it for legal notice. This is how a legal notice is drafted, and this is what a legal notice is. So if you want to watch further videos regarding these topics, please stay tuned to our channel, because every day a new video is uploaded. And if you liked this video, please keep watching and stay safe. Thank you.